morning students, and welcome back you all in my class. So dear students, in my previous class I have discussed about the methods of collecting primary data. So there are mainly 5 methods of collecting primary data. So 5 methods I have already discussed. Okay, so today we are continuing this chapter, and from this chapter our today's topic of discussion is method of sampling. Okay, so this is the next topic after method of collecting, after different methods of collecting primary data. Okay, so this is another methods of sampling is another important topic of collection of data. Okay, so there are mainly different methods of sampling. Okay, so what is sampling? By the term sampling we means that out of 500 students we selected just only 100 students. Means in this method few items are selected. Okay, in this method, just take one example that in this method there are mainly 100 students. So in random sampling method, out of 100 items or out of 100 students, only few students are selected. Okay, so suppose there are how many students? There are 100 students. Okay, so out of 100 students, only 20 students are selected. Only suppose there are 100 students. Okay, so only 20 students are selected. So there are only 20 students. Okay, so this method is actually called sampling method. So but in census method all the items are selected. Suppose there are 100 students and 100 students are actually selected by investigator. Okay, by an investigator. So in case of census method 100 students are selected. Suppose there are 100 students and 100 students are selected by an investigator. But in case of sampling method, samples are taken. Okay, means out of 100 students, only 20 students are selected in order to collect data. Okay, so in order to collect data, only 20 students are selected. Okay, so this method is called what? Sampling method. Okay, and sample method. So there are different methods of sampling. So today I will discuss about random sampling method. So what is random sampling method? Okay, so please listen carefully. So random sampling method, this is the best method of sampling. Why this method is called as the best method of sampling? As because in this method there is no chance of biasness. Okay, means each and every item has equal chance of being selected. Each and every item has equal chance of being here. So in case of random sampling method, there is actually each and every items has equal chance of being selected. मतलब वहाँ पे सबके पास chance रहता है. Suppose
देयर आर 100 स्टूडेंट्स, तो 100 स्टूडेंट्स के पास चांस है सिलेक्ट होने का। किस तरह से सिलेक्ट होने का 100 स्टूडेंट्स का चांस है? वो लॉटरी मेथड से सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। कुछ एक स्लिप होगा कागज का टुकड़ा बना बना के, सो मीन्स जस्ट एक लॉटरी मेथड है, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स का नाम लिखा होगा उसमें। सो सपोज 100 स्टूडेंट्स है क्लास में, तो 100 स्टूडेंट्स का नाम एक छोटा छोटा कागज में लिखा होगा, तो उसमें से हम लोग सिलेक्ट करेंगे, मतलब रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, देख के नहीं, ठीक है, मतलब जस्ट बाय लॉटरी मेथड, ठीक है। सो 100 स्टूडेंट के पास, सबके पास चांस है सिलेक्ट होने का, सबके पास चांस है, लेकिन 100 स्टूडेंट्स तो हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे। सो आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स ओनली 20 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, ओके, इन ऑर्डर टू कलेक्ट डाटा। सो दिस मेथड इज एक्चुअली कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग मेथड। सो इन दिस मेथड ईच एंड एवरी, सबके पास चांस है सिलेक्ट होने का, 100 स्टूडेंट्स के पास चांस है। अभी कौन So dear students, in case of random sampling method, selection of items actually depends on chance. Chance के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। मतलब कौन सिलेक्ट होगा आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, कौन सिलेक्ट होने वाला है वो हमें पता नहीं होता, बट each and every item has equal chance of being selected, okay. इन दिस मेथड इन सबके पास चांस रहता है सिलेक्ट होने का, बट कौन सिलेक्ट होगा वो हमें पता नहीं होता, ठीक है। सो इन दिस मेथड सिलेक्शन ऑफ आइटम्स एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन चांस, चांस के ऊपर डिपेंड रहता है, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। एंड दिस मेथड एक्चुअली अवॉइड्स पर्सनल बायस, ओके, मींस वहाँ पे कुछ पार्शियलिटी नहीं होता है, कोई भी सिलेक्ट होता है। सपोज इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट करता है ना, सो इन्वेस्टिगेटर किसी को सिलेक्ट नहीं कर सकता अपने मन से, ठीक है। सो उसको इन दिस मेथड क्या होता है, बाय चांस सिलेक्ट होता है, बाय लॉटरी मेथड सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। सपोज मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ, अगर मेरा मन चाहे मैं किसी को सिलेक्ट कर दूँ, ठीक है, डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो नहीं होगा। उसमें क्या होता है, पहले लॉटरी मेथड होगा, देन आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स ओनली 20 और 30 स्टूडेंट्स आर एक्चुअली सिलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर। देन इन्वेस्टिगेटर क्या करते हैं, देन दे कलेक्ट डाटा, ओके, एंड ऑल्सो गेट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन from them, okay. So after collection of that data they get required information, okay. So in this method मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, try to understand that वहाँ पे suppose there are 100 students, okay, so only 20 or 30 students are actually selected by an investigator, okay, but each and every items, each and every students have equal chance of being selected. सबके पास 100 स्टूडेंट्स के पास चांस रहता है सिलेक्ट होने का, ठीक है। कुछ पार्शियलिटी नहीं होता, कुछ बायसनेस वहाँ पे नहीं होता, मतलब कुछ भेदाभेद नहीं है, किसी कोई भी सिलेक्ट हो सकता है वहाँ पे, कुछ पार्शियल मतलब किसी के साथ पार्शियलिटी वहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। सबके पास इक्वल चांस रहता है एंड डिपेंड्स अपॉन चांस, चांस से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, डोंट नो, ओके। सो दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ सैम्पलिंग, दिस मेथड इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मेथड ऑफ सैम्पलिंग। इसको बेस्ट मेथड कहा जाता है एज बिकॉज दिस मेथड अवॉइड्स पर्सनल बायसनेस, दैट मीन्स पार्शियलिटी अवॉइड करता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर अगर किसी को चाहे सिलेक्ट कर ले, देन वो नहीं कर सकता, लॉटरी मेथड से सिलेक्ट होगा, जो सिलेक्ट होगा उसको ही सिलेक्ट किया जाएगा बाय लॉटरी मेथड से, ठीक है। सो सबके पास चांस रहता है सिलेक्ट होने का, कुछ पार्शियलिटी नहीं है। सो दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ sampling, my dear students, okay. And this method is also called probability sampling method, okay. This method is also called probability sampling So I hope समझ में आया है वो कॉन्सेप्ट, what is random sampling method. अगर कुछ प्रॉब्लम है then please clear up your doubts, okay. Thank you.
again, good morning students. So this is another important method of sampling. Okay, so two. First one is random sampling method. So sampling means what? Out of 100 students, only few items are selected, means only few students are selected by the investigator. Okay, so this is called sampling method, means all the items are not selected by the investigator. Only few items are selected by the investigator. Okay, so this method is called a sampling method. Okay, so now we are going to discuss about deliberate sampling method. So what is deliberate sampling method? So this is another important method of what? Method of sampling. Okay, so what is random sampling method? Okay, so first one is what? First one is random sampling method. So random sampling method I have already discussed. Okay, so in random sampling method, each and every items has equal chance of being selected. लेकिन ये सबके पास चांस रहता है सिलेक्ट होने का, इस बिकॉज वहाँ पे लॉटरी मेथड का अप्लाई किया जाता है, लॉटरी से सिलेक्ट किया जाता है, तो सबके पास चांस रहता है। इन्वेस्टिगेटर खुद चूज नहीं करता कि आपको इंफॉर्मेशन देना है, आपको इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम में देयर आर 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेटर आया इन ऑर्डर टू, व्हाई वो आया? इन ऑर्डर टू कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन। ओके, सो रैंडम सैम्पलिंग मेथड में ऐसा नहीं होता है कि इन्वेस्टिगेटर खुद से चूज करेगा कि आपको इंफॉर्मेशन देना है, आपको इंफॉर्मेशन देना है, आपको इंफॉर्मेशन देना है। तो रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है? बाय लॉटरी मेथड सिलेक्ट किया जाता है, तो सबके पास चांस रहता है सिलेक्ट होने का, ठीक है। आइटम्स आर एक्चुअली सिलेक्टेड बाय चांस। ओके, सबके पास चांस रहता है बाय चांस, लॉटरी मेथड से सबके पास चांस रहता है सिलेक्ट होने का, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग मेथड. So try to understand. So what is deliberate sampling method? In case of deliberate sampling method, each and every items are not selected by an investigator. Okay, they do not, each and every item has not, they do not have any chance of being selected. Okay, सबके पास चांस रही रहता है सिलेक्ट होने का, as because in this method क्या होता है? in case of deliberate sampling method, investigator क्या करता है? investigator selects as per his needs and desire, अपने मन से जिसको चाहे वो सिलेक्ट कर सकता है इन केस ऑफ डेलिबरेट सैम्पलिंग मेथड. ओके, सो इन केस ऑफ डेलिबरेट सैम्पलिंग मेथड इन्वेस्टिगेटर आएगा, आके पकड़ लीजिए एक क्लासरूम में 100 स्टूडेंट्स है, तो वो आया इन्वेस्टिगेटर इन ऑर्डर टू कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन. सो वो क्या करेगा कि डायरेक्टली बोलेगा कि आपको देना है इंफॉर्मेशन, आपको देना है इंफॉर्मेशन, इस तरह से वो बोलेगा एज पर हिज नीड्स एंड डिजायर, ठीक है। वो किसी से मतलब कलेक्ट कर सकता है, उसको मतलब जिसको मन चाहे वो सिलेक्ट कर सकता है, जिसको वो अच्छा समझे, इन्वेस्टिगेटर जिसको अच्छा समझे उसको वो सिलेक्ट कर सकता है इन केस ऑफ डेलिबरेट सैम्पलिंग मेथड. सो please try to understand. In this method, sample is taken out as per the needs and desire of the investigator. वो खुद से सिलेक्ट करेगा, जिसको मन चाहे वो सिलेक्ट कर सकता है as per his desire, as per his चाहिदा, as per his wants, as per his ज़रूरत, as per his needs. Okay, उसको सिलेक्ट कर सकता है. So investigator selects those items. Investigator उसको सिलेक्ट करेगा which he thinks best. Okay, उसको सिलेक्ट करेगा वो जिसको वो अच्छा समझने वाला है, जिसको वो अच्छा समझेगा उसको ही वो सिलेक्ट करेगा. So there is actually a probability of what? Biasness, personal biasness. There is a chance of biasness. Partiality हो सकता है कि नहीं? Yes, because क्यों partiality हो सकता है? In this method, investigator selects those items to whom he thinks best. Okay, and investigator selects as per
part is needs and desires. So there is actually a possibility of biasness, partiality का chances हो सकता है. ठीक है. So this is called deliberate sampling method. So random sampling method is totally different from deliberate sampling method. Okay. deliberate sampling में क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर खुद सिलेक्ट करेगा जिससे उसको डाटा कलेक्ट करना है. ठीक है. मतलब हाउ आउट ऑफ पकड़ लो वहाँ पे इंडिविजुअल ए बी सी डी, ठीक है, डी ई एफ जी एच आई. तो देयर पकड़ लीजिए, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, देयर आर 100 स्टूडेंट्स, सपोज. ओके, देयर आर 100 स्टूडेंट्स. ओके, सो वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं? 100. ओके, सो आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स investigator selects only 4 students. Suppose A, B, C and D. As per his needs and desire, he selects only 4 students. That is individual A, individual B, individual C and individual D. So this method is called deliberate sampling method. Okay? So I hope कि आपको समझ में आया है. And if you people are facing any problem in any area, then please clear it up, clear your doubts. Definitely I will try to solve your problem, my dear students. So for today this much. Thank you.